Assalamu alaikum students, welcome to your maths class and today we will learn about rounding numbers to the nearest 100. So let's check a number 328. It's a 3-digit number and you have to round it off to the nearest 100. So for that, first of all you have to find the 100 place. Okay? Let's start from the right side of that number. This is the ones place, this is the tens place, so this will be the 100 place. Now underline that 100 place. After that the next thing is कि 100 place के right side पे आपके पास दो digits हैं 2 and 8. You will write 0 in place of these two digits. इसका रीज़न क्या है? Let me tell you. You can check all these numbers, ठीक है? All of them are nearest hundreds. और अगर आप देखें तो इन सब की टेंस और वंस प्लेस पे क्या है? ज़ीरो. सो एज़ यू नो कि 100 में वी हैव 2 ज़ीरोज़ और वो किस किस प्लेस पे होते हैं? टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे. दैट्स वाई व्हेन वी विल राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, हम 100 प्लेस की राइट साइड के दोनों डिजिट्स को सबसे पहले क्या करेंगे? ज़ीरो में चेंज करेंगे. ओके, सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल write 0 for this 8 which is on the ones place and then 0 for the 2 which is on the tens place. After that the number which we underlined, the hundreds place, we have to find what should we write in place of this 3 when we rounded this number. ठीक है, so for that आपने हमेशा चेक करना है tens place के digit को. Okay, let's check that digit. The same method is of checking for this. If this tens place digit is less than 5, then you will keep the digit of the hundreds place same, means 3 में कोई change नहीं आएगा and it will remain same. But if that digit on the tens place is 5 or greater than 5, then you will add 1 in this 3. But as all of us know that this 2 is less than 5, that's why this 3 will remain same and you will write 3 over here. So here 328 is rounded off to 300. Okay, let's check the next number which is 5056. Here you have 4 digits in a number which you have to round off to the nearest 100. So again we will find the 100 place over here and we know that this is the hundreds place. So underline that 100 place. अच्छा, why I ask you to underline the hundreds place? Because ताकि आपको पता हो कि यहाँ तक you have to do the rounding off. इससे पीछे जितने भी numbers हैं you will not do rounding off of those numbers. ठीक है, so but there are some cases in which आपके पिछले numbers भी change हो जाते हैं and I will explain you those cases in my next example. So again after finding the 100 place, what is the next step? कि 100 place की right side पे जो दो digits हैं उनकी जगह पे क्या लगाएंगे आप? zeros. So here the first 0 is for this 6, then the next 0 is for this digit 5. Okay, after that we have to find what should we write for this 0 which is on the hundreds place. So let's check the digit of the tens place. ठीक है, आपने rounding off to nearest 100 करते हुए हमेशा tens place के digit को देखना है. If that tens place digit is 5 or greater than 5, then you will add 1. So here it's 5, that's why we will add 1 in this 0. So 0 plus 1 is 1. ठीक है, now the next is that what should you write for this 5? As I told you आपने rounding off hundreds place तक की करनी थी. That's why we will not change this 1000 place and it will remain same as 5. ठीक है, so here the number 5056 is rounded off to 5100 and it's rounding up. Next number is 1946. First thing is to find the hundreds place. It is the hundreds place. Okay, and after finding the hundreds place, you know that 100 place के right side के दोनों digits को you should change it into 0. Okay, so 0 for the 6 and then other 0 for the 4. Now what should you write for this 9? इस 9 के लिए you should check the tens place number. ठीक है, हमेशा 100 place के साथ वाला जो right side पे digit है you will check that number. Okay, if that number is less than 5, then
this 9 will remain same. So here it's less than 5, that's why 9 will not change. And now next is digit 1, which is on the thousands place. As you know that we are doing the rounding off to the hundreds place, so that's why this one is also not going to change, and the number will be 1900 after rounding off to nearest 100. Okay, now let's check this number. Here you have 5 digits in that number, so this is the hundreds place. ठीक है, अंडरलाइन दैट हंड्रेड्स प्लेस ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करनी है. द नेक्स्ट थिंग इज यू विल राइट 0 फॉर 7 and 6. Okay, this for 0 is for 6, the next 0 is for 7. After this हमने 100 प्लेस की जगह पे क्या लिखना है, इसके लिए किस प्लेस को चेक करेंगे, 100 प्लेस की साथ वाले राइट साइड के डिजिट जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको चेक करना है. एंड वी नो दैट इट्स ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई यू विल ऐड 1 इन दिस 9. नाउ व्हेन यू ऐड 1 in 9 द आंसर इज 10. So as I told you कि when the answer is 10, 2 digit का आंसर आ गया है आपका, और you have other places as well. 9 के पीछे और प्लेसेस आपके पास मौजूद हैं, सो दैट्स वाई यू विल नॉट राइट कंप्लीट 10. इस 9 की जगह पे आप पूरा 10 नहीं लिखोगे, बल्कि यू विल राइट 0 इन प्लेस ऑफ दिस 9. ठीक है, ये 0 आ गया 9 के लिए, सो जो 1 था 10 का दैट विल बी एडेड टू दिस 3. सो 3 + 1 इज़ 4, एंड देन आपका जो 2 है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, दैट विल रिमेन सेम. सो यहाँ पे जो आपका 3 है वो किस लिए चेंज हुआ है, बिकॉज जो आपका 9 था जब वो नेक्स्ट नंबर पे गया उसमें 1 ऐड हुआ तो वो 10 बन गया. तो हम कंप्लीट 10 यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते थे बिकॉज हमारे पास प्रीवियस प्लेसेस मौजूद थी, सो दैट्स वाई हमने 9 की जगह पे 0 लिख दिया, और जो 1 था 10 का वो हमने प्रीवियस प्लेस को कैरी दे दिया, सो वो चेंज होके 4 बन गया और 2 didn't changed. So here 23,976 is rounded off to 24,000. So that is one of the case जिसमें मैंने आपको कहा था कि sometimes आपकी 100 प्लेस के अलावा जो प्रीवियस 1000 प्लेस होती है या 10,000 प्लेस होती है वो भी चेंज हो सकती है. सो वो ये केस होता है कि जब आपका 9 10 बन जाता है एंड आपके पास प्रीवियस प्लेसेस हों तो फिर आपको उसमें कैरी देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी प्रीवियस प्लेसेस में चेंज आता है. सो नाउ लेट्स चेक this page number 16 part B question. CT has covered a distance of 478 meters and you have a number line 400, then 450 and 500. So in this number line I am going to explain you another method as well कि जिसको आप use कर सकते हैं for rounding off to nearest 100, and that method is that you have to check the digits of your number, the last 2 digits, ठीक है, in your number. For example 78 को चेक करें, if the last 2 digits are 50 or greater than 50 then you will always round to the next 100, and if they are less than 50, the last 2 digits की मैं बात कर रही हूँ, if they are for example 23, 49, 34 or any number which is less than 50 then you will always move to the previous 100. ठीक है, so here because it's greater than 50 that's why we round 478 to 500. and another thing is कि आपने ये नहीं देखना again कि why we didn't check 478 with 450, हमने इसको 450 के साथ क्यों नहीं देखा. so here यहाँ पे आपने उस नंबर के साथ राउंडिंग ऑफ करनी होती है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हों, बिकॉज इट्स द राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, एंड 100 में लास्ट 2 डिजिट्स क्या होते हैं, 10s and 1 प्लेस के ऑलवेज 0 होते हैं. सो दैट्स वाई 50 से आप इसको नहीं चेक करोगे. दिस इज़ फॉर द हिंट के दिस इज़ द सेंटर. ठीक है, आपने इसको हिंट के लिए चेक करना है. दैट्स वाई दिस 50 इज़ गिवन टू यू, बिकॉज इफ़ इट्स 50 यहाँ पे है तो 50 या 50 से ग्रेटर होगा तो यू विल मूव टू द नेक्स्ट 100. ओके, so next example, page number 17. Bala has covered a distance of 750 meters. Again the last 2 digits are 50, so I told you if it's 50 or greater than 50 then you will move to the next 100 which is 800. so here 750 will be rounded off to 800. Next example, page number 17, question 2. Round 4628 to the nearest 100. Here you can check again the last 2 digits 28.
and these are less than 50, so that's why it will be rounded off to the previous 100, which is 4600. Okay, and example number 3, page number 17, round 27,493 to the nearest 100. Check the last two digits of that complete number. It's 93 greater than 50. That's why you will round it off to 27,500. So your today's homework is you have to solve question number 2 and 3 of page number 17 book, and you have to solve it on your books. So at the end, I want to share with you some of the hints that whenever you have to do the rounding off to the nearest 10, you will always look at the digits in the ones place, and when you do the rounding off to the nearest 100, you always have to look at the digits in the tens place. If they are 5 or greater than 5, तो आप अपने previous digit को चाहे वो 100 place पे कर रहे हो तो उसको भी आप एक नंबर आगे लेके जाओगे, अगर टेंस प्लेस की राउंडिंग ऑफ करे हो तो उसको भी एक नंबर आगे लेके जाओगे. एंड इफ दे आर स्मॉलर देन 5 देन यू विल कीप योर डिजिट्स सेम. ओके, थैंक यू.